Hello, Assalamu alaikum. I hope all of you are well. I hope you're in good spirits और सब खुशबाश होंगे. It's been quite long, right? It's been like a really, really, really long time. It's been ages that we connected via a live session or we did something here, especially in cohort. And I am truly sorry for that, but in the middle of everything, life happens and you get caught up, and then there's so much to do with work and family and house and God knows what else. हमने पता नहीं कितनी कितनी जगहों पे अपनी टांगे अड़ाई होती हैं. So obviously one gets caught up. Uh, I cannot. I don't know your name. Whoever's here, whoever's written, mashallah, thank you so much. Um, by the way, मुझे बस बता दें if my voice is clear. I think my picture is pretty much clear. It's doable. It's workable. Just let me know of my voice. I cannot turn off the fan because it's quite hot. It's scorching, especially Ramzan mein with all the heat. It's crazy. सब कुछ clear है. All right. Thank you so much. Thank you, Noor. Noor is here with us, and I have to say it on screen that Noor has been so helpful. मुझे इम्प्रॉम्प्टू मैंने डिसाइड किया रमज़ान से बिल्कुल पहले सोचा था कि कुछ सेशंस लाइन अप किए हुए थे लेकिन वो नहीं हो सके बिकॉज रमज़ान में रूटीन वाज सो हेक्टिक. It is still really hectic. I barely get to sleep. I hardly sleep like 3 hours a day and it's crazy. तो आज मुझे लगा कि नहीं थोड़ी सी तबीयत इजाज़त दे रही है कि यार कर ले सेशन. वैसे तो बहुत ख़राब हालत हो गई तारीख से पहले भी और बाद में भी, बट स्टिल आई थॉट लाइक लेट्स डू इट, लेट्स gear up and just do it. So I asked Noor to, के सारा content slides में डाल दें. And he has been so helpful. He has been, preparing those slides for me. So thank you, Noor. I owe it to you. और वो इतनी प्यारी प्यारी slides बना रहा था जब मैं देख रही थी. I was like, oh, that is so sweet. So I had to give this shout out to him. Okay, if everything's clear and if we have 13 people with us, सही है, good enough है. I know Ramzan's hectic. By the way, guys, आप लोगों का कैसा गुजर रहा है रमज़ान? How are the rosas treating you? How are you treating the rosas? Or what's your routine? Let's have some little gupshup in the beginning, and then we'll move on to our topic. और बाय द वे फ्रीलांसिंग कैसी जा रही है? कैसे टाइम निकाल पा रहे हैं? आपकी रूटीन कैसी है? How do you manage it? I'm sure most of the people sleep after sehri because वो sehri से पहले सोना और फिर sehri के लिए उठना काफ़ी मेहम वाली सिचुएशन हो जाती है. अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा. That's lovely. That's really nice. Thank you, ma'am Sharoon. You're always welcome. Okay, so let's start the topic. Since lazy लोग हैं हम, रमज़ान में freelancing मुश्किल. I understand it's very difficult. Very very difficult. मुझे समझ नहीं आता दिन कहाँ जाता है. And it's just crazy. हर वक्त नींद आ रही होती है और वो जो कहते हैं टोटो में सो रहे होते हैं. And most of the people that I talk to उनकी यही routine है, especially the freelancers. Anywho, okay, let's begin with the topic. आज हमने बात करनी है वेबसाइट कॉपी पे कि अगर आपने एक वेबसाइट का कंटेंट लिखना है तो वो आप कैसे लिखेंगे, उसकी क्या कुछ रूल्स हैं, क्या आप टेक्निक फॉलो करते हैं, व्हाट्स द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. So it's the good kind of crazy. Yes, Nafa, I completely agree with you. It's the good kind of crazy. It's super crazy, but it's the good kind. अभी तो कोर्स स्टार्ट के आगे के पता चलेगा. Good to see you, ma'am. Good to have you here too. Okay. Let me just share my screen. You guys have any questions, please keep asking in the comments. You know the format हम कैसे चलते हैं. So you guys can see my screen, right? So we are going to talk about web copywriting by your very own Sharoon Chai. Thank you, Noor, for this. So
वेबसाइट कंटेंट में होता क्या है? बाय द वे, सॉरी, बिफोर आई forget, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड लेट्स स्टार्ट इट विद दिस विश कि अल्लाह ताला इस काम में हमारी बरकत डाले और हर काम अपना बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा से शुरू किया करें आप सब. सो वेबसाइट कंटेंट है क्या? इट्स एवरीथिंग दैट गोज ऑन द वेबसाइट, जिसमें आपके टेक्स्ट हो सकता है, आपका विजुअल कंटेंट है, आपका ओरल कंटेंट है, आपकी वीडियोस हैं, everything that's there on the website, and that creates the entire user experience, right? And it includes text, images, sounds, video, animations, and all of that combined together makes the website experience. हम यहाँ पे कंटेंट, रिटन कंटेंट की बात करेंगे, कॉपी की बात करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा एक मैं आपको बता दूं कि 75% जो consumers हैं, they admit to making judgments on a company's credibility based on the company's website design and also on the content. If the content is weak, if it's not to the point, if it bores them, they leave it. And yes, the design as well, and of course how user friendly the website is. तो वेबसाइट कंटेंट लिखने की जो 4 principles हैं, एंड दैट गोज फॉर ऑल sorts of non-fiction writing. I'm sure you know the difference between fiction and non-fiction. Fiction is all of that you fabricate, जो आप खुद से इमेजिन करते हो, जो आपकी फैंटेसी होती है, या जो आप क्रिएटिव राइटिंग आ जाती है आपकी, जिसमें समथिंग माइट नॉट बी ट्रू, राइट? But non-fiction is based on facts, it's based on the truth, it's what's established, what's already there, it's not based on fantasies. हाँ, उसमें आप जिस तरह वेबसाइट कंटेंट लिख रहे होते हो, कॉपी लिख रहे होते हो, तो उसमें यू कैन क्रिएट सिनेरियोज, but that's obviously taken from the real life. All right. So there are 4 principles of non-fiction writing, and they go very, very true for website copy. सबसे पहले तो you need to keep it short. Keeping it short means that you need to keep it very, very concise, right? You don't need to go blabbering on or rambling on about a certain topic. For instance, अगर आपकी वेबसाइट है, फॉर इंस्टेंस ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में या किसी कंटेंट कोर्स के बारे में, so you need to tell what it is, what it does. Yes, I do understand जो सेल्स पेजेस होते हैं उसमें आप तरह तरह की टेक्निक से यू ट्राइंग टू कन्वर्ट द लीड इनटू एन एक्चुअल सेल, राइट? उसमें कन्वर्जन की बात होती है, तो उसमें आप डिफरेंट तरीक़ों से अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे होते हो. कभी आप वाई इट हेल्प्स यू, बेनिफिट्स की बात कर रहे होते हो, टेस्टिमोनियल्स डाल रहे होते हो, लेकिन वो सब चीज़ें जहाँ जा रही होती हैं, वो एक ही बात को आप बार बार रिपीट नहीं कर रहे होते. So website content में make sure that you keep it very short. You avoid all the filler words. For instance, आपने कहीं एक definition दे दी है, do not explain it unnecessarily. If you feel कि the science behind that thing needs to be explained, आप उसकी subheading दे दें और वहाँ पे उसको explain करें. But then do not go into long details. अब fluff की या filler content की मैं आपको example देती हूँ. For instance, you will be able to do this, right? अगर आप ये लिख लें you will do this, आप वहाँ से be able to वाले 3 words निकाल देते हैं, and you make it even conciser and even more direct. So whenever you're writing website copy, this is true for non-fiction writing, but right now we're going to direct it, steer it towards website copy. So you need to keep it short. Just let me see a quick comment. Welcome back. Thank you so much. All right, going back to my. So number one point is you need to keep it short, and the other point, the second point is you need to keep it simple. So I know simple is kind of similar to short, but it's not really the same thing. And I'm going to give you the slides, so you will have them. You can go through them again and again, and you can ask me your questions and problems. So simple मतलब का मतलब यहाँ पे है कि आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ों को. हाँ, कहीं जार्गन, कहीं टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत है तो ज़रूर करें, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर दें. फॉर इंस्टेंस हाइपरटेंशन की बात होती है, ठीक है? किसी ऐसे बंदे को, अगर ये वेबसाइट उन लोगों के लिए लिखी गई है जिनको नहीं पता कि हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर है, तो यू नीड टू एक्सप्लेन इट, राइट? तो यू नीड टू, वाइल कीपिंग इट शॉर्ट, यू ऑल्सो नीड टू कीप इट सिंपल. अगर आपको लगता है आपकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, ये बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं फ्लावरी लैंग्वेज हो रही है, यू यूजिंग टू
a big too many big words, or you're using a very very high heavy vocabulary, you need to tone it down. You need to make it as simple as your audience can understand it, right? You need to do it from the point of view of the reader. ये हमारा third point भी है. uh, you need to make it about the reader. आप वेबसाइट लिख की कॉपी लिख क्यों रहे हैं? वाई आर यू राइटिंग ऑल द कंटेंट? ऑब्वियसली यू राइटिंग इट फॉर द पीपल जो वहाँ आएंगे, वो पढ़ेंगे, उससे एंगेज होंगे, एंड देन दे विल मूव टुवर्ड्स टेकिंग अ कॉल टू एक्शन. You are not writing it for yourself. If you're writing it for the client, for any of your client is writing it for his or her audience. वो सिर्फ अपने लिए वो वेबसाइट नहीं लिख रहा. That means you need to make it about the reader. You need to understand कि reader का pain point क्या है. Why is that person coming here? वो क्या चाह रहा है, और वो जो चीज़ चाह रहा है वो क्यों चाह रहा है, right? Why does the reader care? और जब आप इस पर्सपेक्टिव से सोचने लग जाएंगे कि रीडर क्या चाह रहा है, आपका यूज़र क्या चाह रहा है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या डिमांड कर रही है, तो आपकी ऑटोमेटिकली राइटिंग में टोन, आपका स्टाइल, आपके वर्ड्स सब चेंज होने लग जाएंगे. सो एट टाइम्स ये होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि why aren't people converting? That's because we are not writing from their point of view. We are writing जो हमें समझ आ रहा है या जो हमें अच्छा लग रहा है. लेकिन अगर आपकी वेबसाइट रीडर्स लोगों के लिए है, राइट, अगर आप आपके आपके अपने लिए, तो आप अपना खुद जर्नल भी तो लिख सकते हैं ना. बट इफ इट्स वेबसाइट, इफ इट्स आउट ऑन द वेब, दैट मीन्स इट्स फॉर द पीपल. देन यू नीड टू मेक इट अबाउट द रीडर. और हाउ टू मेक इट अबाउट द रीडर, उसका आगे एक स्टेप है, दैट यू क्रिएट बायर पर्सोनास, दैट आई विल टेल यू इन डिटेल. बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि आप अपने टारगेट ऑडियंस की थोड़ी सी साइकी समझें. मैंने ई बुक्स पे जो सेशन किया था उसमें मैंने बताया था कि आप सर्वेस कर सकते हैं, आप पोल्स कर सकते हैं, टू अंडरस्टैंड कि आपकी टारगेट ऑडियंस किस प्रॉब्लम से गुजर रही है. सो यू कैन डू दीज लिटिल एक्टिविटीज टू फाइंड आउट what is it that is missing and how you can bridge the gap with your copy. All right. So moving on to the fourth point, you also need to keep it very, very direct. Now, simple, concise, direct, they sort of somehow mean the same thing, but they all have their own definitions and their own identities. सिंपल का मैंने बताया, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करें, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें, और जहाँ जागन ज़रूरी होता है उसको break it down into simple writing, explain the meaning कि भाई है क्या ये चीज़. Concise, keep it short, omit the extra words, don't go into unnecessary details. Details where they're needed, yes, give them. But where they're not needed, omit them. Okay, now keeping it direct. Direct means that you need to, one, you need to directly talk to the audience. You need to, it needs, the content needs to feel that आप उनसे engage कर रहे हैं, आप उनसे converse कर रहे हैं, आप उनसे खुद बात करें. Secondly, passive voice में ना लिखें, active voice में लिखें. ठीक है, you will get this from here, right? This course will help you increase your vocabulary. This course will help you build your communication skills. This program will skyrocket your sales, right? इस तरह नहीं लिखें, your scales will be skyrocketed by taking this course. Passive voice में ना जाएं, active voice में जाएं. और active और passive पे मेरा जो फर्स्ट सेशन था कंटेंट राइटिंग का, वो इस कोहोर्ट में पड़ा हुआ है. You guys can go to it, check it out any time of the day. Slides भी हैं और उसमें काफ़ी डिटेल बताई गई है. One more thing that I wanted to ask, I'll take the liberty of asking this here. A lot of you wanted to have, you know, an ongoing session on content writing again. So if you guys are interested, तो रमज़ान के बाद हम वो भी यहाँ पे start कर सकते हैं दोबारा से. For all those people who are new and who missed out on that, I know वो दोबारा से refresh होने की ज़रूरत होती है, so we can do those sessions again. Okay, अभी तक सब समझ आ रहा है? Should I continue? बड़ी देर बाद आपको देखा है. कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र. Thank you, Star and Academy, whoever is using this account. Thank you so much. Okay, I think I should continue. You guys don't have any problem right now.
And if my voice is a bit nasal, that's because, yeah, flu hua hai. All right, so we've discussed these four principles. You need to keep it direct, you need to make it about the reader, you need to keep it short and very, very simple. अच्छा जी, अब सेकंड जो इसकी बात आ जाती है कि वेबसाइट के गोल्स पे, ये मॉड्यूल 2 आ रहा है। असल में यही मैंने कोर्स एक जगह आई मेड इट फॉर अनदर कंपनी प्लेस एज वेल वेयर इट वाज बीइंग सोल्ड, तो उस वजह से मॉड्यूल 2 आ रहा है। जस्ट इग्नोर दिस पार्ट। वेबसाइट के गोल समझें, वो वेबसाइट करना क्या चाह रही है। सारी वेबसाइट सेल्स की पर्पस के लिए नहीं होती। देर आर वेबसाइट दैट आर जस्ट इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। तो थोड़ा सा वेबसाइट के गोल को समझ जाएं कि वो क्यों बनाई गई है और वो क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाह रही है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक वेबसाइट जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करने के ऊपर है रिगार्डिंग कोविड-19 या उसमें क्या हो रहा है, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल दैट आई मेड टू शेयर इट विद यू गाइस, ताकि समझ आ जाए कि एक वेबसाइट के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। एक उसका हो सकता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट COVID-19, what it is, to help the users or citizens of Pakistan understand the precautionary measures they should take, to help them understand and become aware and implement the measures जो उनको लेने चाहिए। पहला था कि अंडरस्टैंड करने कि क्या मेजर्स लेने चाहिए, दूसरा था उनको इनकरेज किया जाए कि वो इम्प्लीमेंट भी करें। ठीक है, फिर अपडेट किया जाए करंट कोरोना वायरस केसेस के ऊपर जो कंट्री में हो रहे हैं। उसके बाद वो एरियाज पर पता चले जो अंडर स्ट्रिक्ट क्वारंटीन है। इसी तरह आपकी कोई भी जो वेबसाइट है, फॉर इंस्टेंस मेरी वेबसाइट है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ कंटेंट राइटिंग की, कॉपी राइटिंग की, और मैं वो सर्विसेज दे रही हूँ एंड आई एम प्रोवाइडिंग एंड आई एम लुकिंग फॉर क्लाइंट्स, तो उस वेबसाइट का क्या मकसद है। एक उस वेबसाइट का मकसद है मेरा पोर्टफोलियो दिखाना, राइट। दूसरा मेरी सर्विसेज बताना लोगों को। तीसरा उन लोगों को बिकॉज उस पर ब्लॉग्स भी हैं, उन लोगों को हेल्प आउट करना जो ये चीज़ें सीखना चाह रहे हैं और लेटेस्ट कंटेंट और कॉपी राइटिंग के ट्रेंड से अवेयर करना। सो इसी तरह आप जो भी वेबसाइट लिख रहे हैं उसके पहले ऑब्जेक्टिव्स अंडरस्टैंड कर लें। वाई? बिकॉज इससे आपको समझ आ जाएगा कि हमने किस सेक्शन को किस तरह डील करना है और उसका कंटेंट कैसे लिखना है, उसका उसकी स्टाइल और उसकी टोन कैसे होनी चाहिए। आई नो एक तरीका है कि हम टॉप वेबसाइट्स देखते हैं, उस नीश उस कैटेगरी से रिलेटेड वहाँ से कंटेंट उठाते हैं, उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, रेडी हो जाती है। बट दिस इज़ वाई यू डोंट हैव योर ओन वॉइस, और दिस इज़ वाई योर क्लाइंट्स फील कि उनकी वॉइस नहीं झलक रही, बिकॉज हम उस कंपनी को या उस ब्रांड को अंडरस्टैंड करने में टाइम नहीं लगाते। सो ट्राई टू डू थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली दिस टाइम अराउंड। ऑलराइट, जब आपको वेबसाइट के ऑब्जेक्टिव ज़रा समझ आ गए, then you need to move on towards understanding the audience personas, buyer personas. आपकी ऑडियंस का एक बड़ा सा ग्रुप है, ठीक है। You say, for instance, you're dealing in women's wear clothing, so naturally it's women is the main audience, but खवातीन में भी कितने आगे बायर पर्सोनास है, मतलब कितनी आगे डिविजन्स हैं। कुछ खवातीन हो सकती हैं जिनका स्टाइल थोड़ा शीक है, कुछ खवातीन हो सकती हैं जो कैजुअल वेयर ज़्यादा पसंद करती हैं, कुछ खवातीन हो सकती हैं who are more into formal wear or contemporary style। उस हिसाब से आपके डिफरेंट ऑडियंस पर्सोनास या आपके बायर्स पर्सोनास बन जाते हैं। सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग द वेबसाइट कंटेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑडियंस क्या डिमांड कर रही है, उनकी क्या नीड है, और यहाँ पे आप बायर पर्सोनास बना लेते हैं। ओके, सो इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है आपकी एक मेन टारगेट ऑडियंस में कितनी कितनी सब डिविजन्स हैं, और इसके लिए यू नीड टू सर्वे द मार्केट। आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप किस ऑडियंस को डील करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप एक और काम कर सकते हैं कि आप एक टेबल बना लें जिसमें आप खुद से इन्विजन करें, खुद से सोचें आफ्टर ऑल द सर्वेज कि आपकी वेबसाइट पे कितने कितने टाइप के यूजर्स आ रहे हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक
कॉलेज की वेबसाइट का की कॉपी बना रहे हैं, तो उसके यूजर्स कौन होंगे? स्टूडेंट्स होंगे, पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, अगर वो आईटी रिलेटेड आईटी एक्सपर्ट्स होंगे, या और डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होंगे, और फिर वो सब लोग भी होंगे जो who are coming in to look for work, who want to start their career or want to switch their career or whatever, and then collaborators and investors. So, okay, this is something I learned in my MBA, and this was a very very helpful technique. कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स बना लेते हैं ना, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है समझने में कि आपकी वेबसाइट पे कौन लैंड करने वाला है, और हमने किस पार्ट ऑफ वेबसाइट से उस बंदे को टारगेट करना है। ठीक है, ओके। सो इस तरह से आपने एक टेबल बना लिया ऑल द डिफरेंट पीपल दैट यू फील कि ये मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, एंड दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू रीड थ्रू इट, and then you are going to go into the details, dive into the details of their demographics. वो किस एज ग्रुप में है, उनकी क्या नीड्स हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, वो क्या देखने आ रहे हैं, कौन सा सीटीए उनको बेहतर टारगेट करेगा, केटर करेगा, उनकी नीड्स को बेहतर एड्रेस करेगा। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का ज़्यादातर होता है कि माई चाइल्ड शुड एस इन द एग्जाम्स और एस हिज और हर एकेडमिक्स, या सो वहाँ पे आप इस तरह की टोन यूज़ करोगे। इफ़ यू वांट योर चिल्ड्रन टू एस देयर एकेडमिक्स और पास विद फ्लाइंग कलर्स और बी द टॉप ऑफ देयर क्लास, राइट, this program is for you, or this our university or college or whatever offers programs that best cater to your student, your children's needs. तो वहाँ पे आप पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हो, जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस कोई कोर्स का है और एनरोलमेंट की बात हो रही है, तो यू नीड टू स्पीक टू देम। तो इसी तरह व्हेन यू टारगेट द ऑडियंस पर्सोनास, यू काइंड ऑफ गेट द हैंग ऑफ कि हमने कहाँ पे कैसी टोन यूज़ करनी है। जस्ट लेट मी गो थ्रू द कमेंट्स कि कोई क्वेश्चन वगैरह ना हो। अच्छा, ओके मैम, हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ active voice? Very informative session, Saida Anwar. Thank you so much, Saida. Thank you. ये question जो है ना, मैं ये लेती हूँ। How to resolve the problem of conjunctive passive voice instead of normal active voice sentences? मैं articles और blog post writing के लिए sample बना रहा था, तो Grammarly में content पे passive sentences ज़्यादा नहीं, वैसे पूरा written दे रहा है। Okay. पैसिव वॉइस में ये होता है कि जिस चीज़ पे काम हो रहा होता है ना, वो पहले आ जाता है। आप लिखते इस तरह हो, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, राइट? द बुक इज एन ऑब्जेक्ट, आई एम द सब्जेक्ट, आई एम परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ रीडिंग द बुक। अगर मैं कहूँगी द बुक इज बीइंग रेड बाय शरून, तो वो पैसिव हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप पहले ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हो, फिर उस पर एक्शन बता रहे हो, और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने सब्जेक्ट को पहले मेंशन करना है, फिर एक्शन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर लुकिंग टू लूज वेट, दिस प्रोग्राम इज फॉर यू, राइट? दिस वेरी क्लियरली शोज कि इससे आप वेट लूज करते हो। अगर आप ये कहो, इसको हम अगर पैसिव वॉइस में करें कि by using this program regularly you will lose weight, ये थोड़ा सा पैसिव हो जाता है। You it is still in the active form but still a bit passive। तो पैसिव में क्या होता है कि आप एक तो आपकी टेंस चेंज हो जाता है, पास में चला जाता है। सेकेंडली, आपका जो सब्जेक्ट है ना, वो बिल्कुल एंड पर चला जाता है। What you can do right now is, आप मुझे थोड़े से एग्जाम्पल्स दे दो जो सेंटेंसेस आपके आ रहे हैं पैसिव में, मैं उनको बता देती हूँ कि आप एक्टिव कैसे करो। Thank you so much, Amir. That's really nice of you. ओके, कंटेंट राइटिंग के लिए एआई टूल्स। ओके, देखें, हाँ अब बहुत यूज़ हो रहे हैं, आप कर लें यूज़। इट डज स्पीड अप द प्रोसेस, होता है
लेकिन आई वुड स्टिल से कि अपनी रिसर्च ज़रूर करें, अपनी एक्सपर्टीज़ को ज़रूर काम में लाएँ, बिकॉज़ वो जो इन डेप्थ रिसर्च या जो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन एक एक्सपर्ट दे सकता है, वो एआई टूल अभी भी नहीं दे सकता। एट द एंड ऑफ द डे बनाया तो वो इंसान ने है, राइट? सो आई बिलीव इन दैट। प्रो टिप्स फॉर टारगेट ऑडियंस। थैंक यू सो मच। आपने बताया था अपना नाम नसीर। थैंक यू सो मच। यस, आप काफ़ी एक्टिवली फॉलो भी करते हैं, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आई गो बैक टू शेयरिंग द स्लाइड्स। ऑलराइट। अच्छा जी, फिर आप थोड़ा सा वेबसाइट की हायरार्की को समझ लें कि उसमें कौन कौन से पेजेस आ रहे हैं। आपका एक होम पेज है, और क्या वो आपका होम पेज वो आपका लैंडिंग पेज भी है, या आपका लैंडिंग पेज कोई और है। उसके बाद आपका अबाउट अस पेज आ जाता है, फिर आपका सर्विस पेज या प्रोडक्ट्स वाला पेज आ जाता है, फिर आपका कॉन्टैक्ट वाला आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए, बिकॉज इन सब के लिए डिफरेंट तरीके से कंटेंट लिखा जाएगा। एक सेकंड। ओके। होम पेज में क्या होता है? होम पेज में होता है कि आप थोड़ी सी, एक तो वो स्निपेट्स दे रहे होते हैं अबाउट द लेटेस्ट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बिजनेस, राइट? आजकल होम पेज में क्या होता है कि आपका हेडर के नीचे स्लाइडर्स चल रहे होते हैं, जिन पे आपको कैची वन लाइनर्स लिख रहे होते हो, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, टू द सर्विस और द वर्क दैट इज बीइंग डन। या आपका कुछ में कोई स्लोगन आ जाता है, टैगलाइन आ जाती है। उसके बाद यू मूव ऑन टू quickly describing briefly that who are you, or what is it that you do, or what is it that your brand does. Then you move on to describing के why choose this, why us, right? आप थोड़ी, सॉरी, उससे पहले आप थोड़ी अपनी सर्विसेज बता देते हो या प्रोडक्ट्स बता देते हो, ब्रीफली यहाँ पे बताते हो। फिर why us, some pointers about why choose us, and then maybe you can have some recommendations or testimonials or your clients। उसका clients वाले section में आपके logos आ जाते हैं, कोई एक one liner आ जाता है कि these are the prestigious clients that we've served। और testimonials में आ जाता है here's why our clients love us, or this is what our clients have to say about us, and then you give testimonials। एंड देन ब्लॉग सेक्शन का आ जाता है, और फिर आपके सोशल्स का आ जाता है। सोशल्स, अपने जो सोशल मीडिया है उन चैनल्स को ज़रूर इंटीग्रेट करें। फिर आता है आपका अबाउट अस पेज। दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पेज, बिकॉज दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू टेल योर ऑडियंस अबाउट आपकी सारी स्टोरी, या आप कौन है, आपका ब्रांड क्या है, और आपका ब्रांड क्यों एग्जिस्ट करता है। अब इसमें क्या होता है कि अबाउट अस में there are different ways to go about it. Some people or some businesses who like things to be very very concise and not just go into long details, वो बस अपना अबाउट अस में थोड़ा सा बता देंगे कि कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, थोड़ी सी हिस्ट्री बता देंगे। बट देन देयर ब्रांड्स हु लाइक टू टेल देयर स्टोरी, राइट? द ब्रांड स्टोरी, दैट हाउ दिस ब्रांड केम इनटू बीइंग, और कौन कौन है इसके पीछे, टीम कौन कौन है। एंड आई बिलीव दैट्स अ वेरी good strategy, because it helps you connect with the user. I know not everyone reads a lot, but the people who genuinely care about the brand, who want to build that relationship, they want to know कि वो brand कैसे came into being, right? So do take the effort of writing your brand story, how it came into being, who is the team, what is it that you guys do। फिर आपके प्रोडक्ट या सर्विस पेजेस आ जाते हैं। उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि एक पेज है, उसी में डिफरेंट सेक्शंस है, और यू कैन हैव डिफरेंट वेब पेजेस, सब पेजेस। दैट्स टोटली ऑन यू, दैट्स टोटली ऑन हाउ मच यू वांट टू राइट, और हाउ व्हाट आर योर क्लाइंट्स नीड्स, और इस हिसाब से। फिर आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आजकल आपकी वेबसाइट का एक ब्लॉग सेक्शन ज़रूर होना चाहिए, जिसमें you talk about the different things related to your website, your products, your services, and the different trends related to the industry you're serving in। आप जिस इंडस्ट्री में हो उससे रिलेटेड क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, फिर क्या नई इन्वेंशंस हो रही हैं, और यू कैन गिव योर 2 cents ऑन अ टॉपिक। ब्लॉग से ये होता है कि पीपल आर एबल टू एक्सप्लोर डिफरेंट साइट्स,
and then obviously it helps massively in ranking as well. And then you must have a contact page so people know how to contact you, how can they get in touch with you. ओके जी। अब आ जाती है कि आपने जब आप कंटेंट लिख रहे हो तो यू नीड टू मैप इट टू द क्लाइंट्स लाइफ साइकिल, राइट। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि वो क्लाइंट्स, आपके जो विजिटर्स आ रहे हैं, प्रॉस्पेक्ट्स आ रहे हैं, वो उनको, इट शुड लीड देम डाउन द सेल्स फनल। और जो आइडिया मॉडल की हम बार बार बात करते हैं कि अटेंशन क्रिएट करें, इंटरेस्ट बिल्ड करें, डिज़ायर क्रिएट करें, फिर आपसे एक्शन दिलवाएं। तो आपका भी जो कंटेंट है वो ऐसे ही जाना चाहिए। पहले आपने कोई ऐसे बात करनी है जिससे आप अटेंशन ग्रैब करो अपने रीडर की। देन यू नीड टू मूव ऑन टुवर्ड्स बिल्डिंग मोर इंटरेस्ट, क्रिएटिंग मोर हाइप। देन यू नीड टू गिव इन ऑल दोज जूसी सॉसी डिटेल्स के डिज़ायर क्रिएट हो, उस बंदे का दिल चाहे कि whatever it is that is being shown here, I should get it। यहीं पे आपके वो लंबे लंबे सेल्स पेजेस आते हैं जहाँ पे वो आपको बता रहे होते हैं कि ये वाला जो कॉपी राइटिंग का कोर्स है, इसने इस बंदे को एक महीने में वो $1000 पर मंथ कमाने लग गया, एक एक क्लाइंट से वो $600 कमा रहा है। तो इससे आपकी डिज़ायर क्रिएट होती है एंड देन यू मूव ऑन टू क्रिएट, यू टेक एन एक्शन, दैट इज़ योर CTA। और वो क्या है, वो कैसे होता है, वहाँ पे यू टेलिंग पीपल दैट दिस इज़ द ऑफर फॉर यू, या दिस इज़ गोइंग टू लास्ट दिस मच टाइम एंड दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ, राइट। सो इस तरह मेक श्योर कि आप अपना कंटेंट जो है वो क्लाइंट की लाइफ साइकिल के साथ मैप करें। अच्छा जी। अब जब बात आ गई, ये सारी चीज़ें हमने अंडरस्टैंड कर ली, अब आप लिख रहे हैं कंटेंट, तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड आपकी वेबसाइट की यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, आपकी USP क्या है। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, व्हाट इज इट दैट योर प्रोडक्ट, योर सर्विस हैज, जो कहीं और नहीं मिलेगा। मतलब इट्स यू क्या ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपका ब्रांड, आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस दे रही है, दैट योर टारगेट ऑडियंस वोंट find anywhere, that is your USP or your UBP, we can call it that as well, two names for that। So ये वाली चीज़ you need to highlight, you need to spend some time understanding। Just let me check on the questions। I am constantly sharing slides। मैं नोट्स, अच्छा ग्रुप में, मैं एक सेकेंड, मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी डाल देती हूँ। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट नॉट फीलिंग टू वेल। जोश में मैंने कहा आज कर तो लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे फील हो रहा है कि द जुकाम एंड द स्लाइट टच ऑफ हिंट ऑफ फीवर जो है ना, इट्स गेटिंग टू मी। ओके, मैं स्लाइड्स डाल रही हूँ अभी ही, तो आपने घबराना नहीं है। यू गोइंग टू गेट दीज इन अ बिट। चलें जी, हो गया है, स्लाइड शेयर हो गई है, अब आपको मिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? अच्छा जी, ओपनिंग पैराग्राफ किसका? आप होम पेज की बात कर रहे हैं, आप अबाउट की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? आई एम गोइंग टू गो बैक टू शेयरिंग द स्लाइड्स। यहाँ पे मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं। सो हौसला रखें, जाके चेक करें, रिफ्रेश करें और डाउनलोड कर लें। ओके, सो फिगर आउट योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट है, उसकी क्या खास बात है? वो ऑर्गेनिक है, इज दिस व्हाट यू सेलिंग, राइट?
या फॉर इंस्टेंस आपको कोई पेन रिलीविंग ऑयल है, उसकी क्या खास बात है? क्या वो इंस्टेंट पेन रिलीव करता है? आपका कोर्स है, उसकी क्या खास बात है? विल दैट हेल्प समवन टू स्टार्ट देयर करियर, या उसका मकसद ये है कि वो काम करना कैसे वो सिखा देगा? तो आपकी जो भी यूएसपी है, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम फिगरिंग दैट आउट, फाइंडिंग द राइट एडजेक्टिव्स फॉर इट, ताकि आप उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकें, एंड देन यू गोइंग टू यूज इट टू सेल योर प्रोडक्ट और योर सर्विस। ओके, सो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि यूएसपी क्या है ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस दैट वी आर राइटिंग फॉर? व्हाट डज इट डू? These are the different questions that help you figure out the USP. हम अक्सर कहते हैं ना यार, है क्या, सानू की पता, मतलब just make it very very simple. मेरा, because I've written lots of actionable ebooks जिसमें मैं बिल्कुल जाती हूँ एक बंदे के स्टेप वन से सोचती हूँ कि उसको कहाँ से स्टार्ट करना है. सो दैट्स वाई आई कैन टेल यू कि जस्ट मेक इट सिंपल फॉर योर सेल्फ. उसको ब्रेक डाउन करें. ठीक है, यूएसपी को फिगर आउट करने के लिए ब्रेक डाउन करें. सबसे पहले वो करता क्या है, वो प्रोडक्ट या वो सर्विस करता क्या है, या वो बिजनेस करता क्या है. फिर वो क्या वैल्यू दे रहा है अपने यूजर्स को. यूजर्स अगर कोई बंदा वो यूज कर रहा है, चाहे वो क्रीम है, कोई वो हेयर ऑयल है, कोई वो टूल है, कोई वो सॉफ्टवेयर है, तो उससे उनको क्या वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो रही है. फिर यूजर्स उससे कैसे बेनिफिट कर रहे हैं. दीज आर काइंड ऑफ रिलेटेड. यहाँ पे आप बेनिफिट्स को ज़्यादा हाईलाइट कर देते हो. फिर वो उनका एक्सपीरियंस कैसे इम्प्रूव कर रहा है, क्या कन्वीनियंस आ रही है, क्या कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या उनकी एजिलिटी बढ़ रही है लाइफ में, क्या उनकी एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है. देन हाउ इज इट बेटर और डिफरेंट देन द कंपेटिटर ऑफरिंग्स. आपके कंपेटिटर से आपकी चीज़ कैसे बेहतर है, वो क्या चीज़ है जो आपका कंपेटिटर नहीं दे पा रहा, या उसकी चीज़ में, उसकी प्रोडक्ट में, उसकी सर्विस में वो मिसिंग है. then what is it that gives you an edge over its competitors. यही बात दूसरे तरीके से होता ही है कि at times, okay, every person does not understand the same thing in the same way. So that is why you position or you rephrase a question in different ways to make sure कि इस अब वाला जो इसका आंसर होगा वो शायद आपकी एक बार persona को बेहतर टारगेट करे. तो ये सारी चीज़ों के आंसर्स jot them down and then figure out कि आपकी यूएसपी है क्या. What is it so unique about your particular product or service? Okay, so then you need to create an agenda for every web page. हर वेब पेज का आपने एक एजेंडा बनाना है कि इसमें हमने क्या बात करनी है. इसमें फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कीवर्ड्स आपने निकालने हैं, तो कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, क्यों यूज़ करने हैं, इस वेब पेज पे किस टाइप की ऑडियंस आ रही है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और इसका ओवरऑल कितना कंटेंट वर्ड काउंट कितना होना चाहिए. ठीक है, मेक श्योर आपका फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी. एट टाइम्स जस्ट टू, बिकॉज यू नो गूगल अप्रिशिएट्स के भी ज़्यादा कंटेंट हो, उस चक्कर में हम फ्लफ और बिला वजह का आए बाएं शाएं पता नहीं क्या क्या लिख रहे होते हैं, एंड डज नॉट मेक सेंस. नहीं अगर समझ आ रही, इट्स बेटर टू कीप इट कंसाइज एंड देन यू नो हायर एन एक्सपर्ट अगर बहुत ही लंबा करना है आपको. लेकिन आप, इफ़ यू राइटिंग इट योर सेल्फ, ट्राई नॉट टू compromise on the quality by just increasing the quantity. Okay, here I just broke down the agendas for different pages, different web pages, and their different objectives. So you know you can understand them better. मैं सिर्फ साथ साथ क्वेश्चन देख रही होती हूँ. ओके, होम पेज ठीक है नसीर, हम होम पेज की बात करते हैं अभी. होम पेज क्या करता है कि, sorry, it gives you an overview of the business, how it works, its products, its services, how it gives you value. So the best way to start is it to start with a tagline, right? That's the hook of your website. To start it with something, some catchy one-liner or phrase, चाहे वो बेशक आपकी tagline ना भी हो, कि जिससे आप लोगों की attention grasp कर सकें.
you know, uh, for instance, escalate your growth in 90 days, or land your dream job in 15 days, or something like that. Something that speaks to the audience, because attention span is constantly decreasing. 8 सेकंड था जो भी मैंने लिखी थी चीज़, लेकिन अब उससे भी कम हो गया, 4 से 6 सेकंड पे आ गया. 6 सेकंड इज लाइक मोर ऑफ एन एवरेज. But the point is, it's constantly decreasing, which means you need to grab your audience's attention right away. और वो कैसे होगा? When you present something catchy on the side. Okay, तो होम पेज में आपने इस तरह करना है, एक कैची वन लाइनर देना है, और नीचे अगर उसके यू जस्ट डिस्क्राइब व्हाट इट डज इन फ्यू वर्ड्स. ठीक है. एंड जहाँ पे आप बता रहे हैं कि आपका काम ये है, उधर आप स्टार्ट करें. फॉर इंस्टेंस, अपने ब्रांड का नाम लिख के, हेल्प्स यू grow your business or helps you start your freelancing career, so you can stop living from one paycheck to another. It's plain and simple, right? अच्छा जी, about us page मैंने पहले भी बताया था, talks about the company, it gives insight into their vision, their mission, their objectives, and it ties it with the value they offer to the users and clients. अब सर्विस प्रोडक्ट पेजेस जो सारी कंपनी की ऑफरिंग्स हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं. जब आप लिख रहे होते हैं, मेक श्योर कि आप स्पेसिफिक हों और क्लियर हों, यू नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, और आप इसको क्लियरली एक्सप्लेन करें. आप इंटरेस्टिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आप स्टैट्स और फिगर्स शेयर कर सकते हैं, आप कोट्स डाल सकते हैं डिफरेंट जगहों पे. स्टैट्स और फिगर्स बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए कि लोगों को पता चलता है कि इतने लोगों ने बेनिफिट किया. फॉर इंस्टेंस, आपका कोई वेट लॉस प्रोग्राम है, तो 5,000 users who've used this program have lost this much weight in this many days. So it motivates the people कि okay, अच्छा इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, so maybe I should try it as well. इसी तरह जहाँ कहीं आप रिसर्च से लिंक कर सकते हैं, आप रिसर्च से लिंक कर लें. When you're writing it, make sure कि आप प्रूफ रीड ज़रूर करें. उससे ये होता है कि कहीं कोई किंग्स हैं, कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो रिजॉल्व हो जाती हैं. एक्स्ट्रा वर्ड्स आ गए, फिर आ गया, आपने वो निकाल दिया और डायरेक्ट हो जाता है. देन मेक श्योर कि आपकी हेडिंग्स पे, देन अगेन आई हैव टॉक्ड इन डिटेल, पूरा सेशन इसी पे था मेरे कंटेंट राइटिंग वाले कोर्स में, कि आपकी जो डिफरेंट सब हेडिंग्स हैं वो आप ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज इट मेक्स योर कंटेंट ब्रीदेबल एंड रीडेबल. अगर मैं यहाँ से सारी बुलेट्स हटा दूँ और एक बड़ा चंक ऑफ कंटेंट हो, तो वो instantly आपको ओवरवेलम करता है, and it presents a very scary picture, like oh so much to read. But at the same time, जब मैं उसको ब्रेक डाउन कर दूँ, बुलेट्स डाल दिए, यहाँ एक सब हेडिंग और डाल देती तो और आपके लिए अच्छा हो जाता. तो इसी तरह आपने भी अपने यूजर्स को, अपनी ऑडियंस को फैसिलिटेट करना है थ्रू आउट द प्रोसेस. और वो आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे? जब आप कंटेंट उनके लिए कैची बनाएंगे, आप हेडिंग्स डालेंगे, जहाँ बुलेट्स की ज़रूरत है वहाँ बुलेट्स डालें, पैराग्राफ्स को शॉर्ट रखें. तो इससे आपका कंटेंट की रीडेबिलिटी एनहांस होती है और आपका यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ता है. ओके जी, यूज़ द राइट लैंग्वेज. ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट मूविंग टुवर्ड्स द एंड. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. सॉरी. ओके, सो राइट लैंग्वेज बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर उर्दू समझती है, तो आप उर्दू में लिखें. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा एक स्टार्टअप है राइजिंग अबव सोशल के नाम से, और आई नो हम उसको जिन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश, अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते या नहीं पढ़ सकते. तो हमने ऊपर ऑप्शन दी है लैंग्वेज की, और आप उर्दू में वो पूरी साइट कन्वर्ट हो जाती है, ताकि आपके ऑडियंस जो ना ओवरवेलम ना हो. आपके ऑडियंस को ये ना फील हो कि यार साइट तो मेरे लिए थी, लेकिन मुझसे तो मुखातिब ही नहीं किया जा रहा, मेरी तो ज़बान में बात नहीं की जा रही, या वो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, वो लैंग्वेज या वो टर्म्स यूज़ की जा रही हैं जो मुझे समझ नहीं आती. सो येस, योर ऑडियंस कैन गेट ऑफेंडेड.
So it's best that you use the language, जिसमें language in itself कि इंग्लिश, उर्दू, whatever, स्पेनिश, आप जो आपकी ऑडियंस बोलती है उसमें लिखें. सेकेंडली जो टर्मिनोलॉजी वो यूज़ करते हैं, राइट. अगर मैं यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ, जेन जी के बच्चों की बात कर रही हूँ, नॉट सारे बच्चे बट स्टिल तो दे आर मोर इनटू हिप या ट्रेंडी लैंग्वेज. तो उनके लिए मैं अपनी वेबसाइट पे स्लैंग भी यूज़ कर सकती हूँ, दैट वुड रिलेट टू दैम. बट इफ माई वेबसाइट इज फॉर बेबी बूमर्स, दे अप्रिशिएट प्रॉपरली sentences. They do not appreciate the slang. उनको नहीं समझ आती, उनको acronyms नहीं समझ आते. If you know what I mean, को अगर मैं IYKW I am लिख रही हूँ, they won't understand it. And there and then they would lose interest in the website. However, वही ऑडियंस अगर चेंज हो जाती है, मेरे आपके जैसे लोग हैं या जेंजी के लोग हैं या मिलेनियल्स हैं, उनको ये बात समझ आएगी, दे वुड बी एबल टू रिलेट टू इट. सो नोइंग आपकी साइट पे कैसी ऑडियंस आ रही है, उस तरह की लैंग्वेज, उस तरह की टर्मिनोलॉजी, उस तरह के फ्रेजेस आप ज़रूर यूज़ करें. ओके जी. पावरफुल वर्ड्स. देखिए हर वर्ड का ना एक अपना इफेक्ट होता है, एंड इट influences you a certain way. For instance, we empower you. It sounds stronger and more powerful as compared to we help you grow. इसी तरह achieve exponential growth. Exponential growth में बढ़ती जा रही है is more enticing than grow bigger. So when you're writing the website copy, you need to inject in some powerful words, some power words जो कि आपकी ऑडियंस की साइकी के साथ प्ले करें और उनको अच्छे से टारगेट करें. अब एक चीज़, पावरफुल वर्ड्स में सिर्फ ये नहीं होता कि बहुत बड़े बड़े वर्ड जो हैवी साउंड करें ना, जाइजेंटिक या इनॉर्मस या इस तरह के वर्ड्स नहीं. इट बेसिकली मीन्स द वर्ड्स दैट हैव अ पावरफुल इम्पैक्ट. तो आगे मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगी जो आपको बहुत शायद लाइट लगे, बट उनका इफेक्ट काफ़ी स्ट्रांग होता है. फॉर इंस्टेंस, इमेजिन. Imagine is a very, I would say, powerful words in the sense that it takes you on a journey, right? When you start imagining, imagine that you are in a room full of chocolate, or imagine that you're in a beautiful meadow, relaxing on a grassy land, with a lovely waterfall cascading besides you, birds chirping, and you're away from the hustle and bustle of the city. Instantly you start imagining yourself there and you feel lost, and you're like, oh wow, it feels good, it feels relaxing. और शायद उसी इमेजिनेशन से आपको इन इनकरेज कर रहा हो कि यार अब ये रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी ये खरीद लेगा. ठीक है. सो आपने भी डिपेंडिंग ऑन वेयर यू कैन यूज दिस वर्ड, प्लीज हर जगह हर वर्ड नहीं इंजेक्ट होता, ऐसी बिला वजह नहीं घुसाना. लेकिन depending on the kind of content you're writing, what your product is, what your service is, use this word wherever necessary, wherever you're trying to create a scenario. Okay, new. We love this word, here's something new for you, or we're bringing in new technology or new content or new ideas. This is another word that sparks engagement. So use it. For instance, new updates coming in, new products coming in soon, stay tuned. Free. जितना मर्जी हम कह लें कि वी ट्राई टू अवॉइड clutter, yeah, we try to live a minimalist life. Most of us, I would still not say all, I never try not to generalize things, but we do get attracted by the word free. Free. मुफ्त की कोई चीज़ मिल रही हो, हम कैसे छोड़ दें, right? We all want that. तो इसी तरह, if there is something that you can offer for free, whether it's a consultancy or whether there is free ideas, और कुछ आपकी कोई भी ऑफरिंग है जो आप फ्री दे सकते हैं, तो वहाँ पे अपना फ्री का वर्ड ज़रूर यूज़ करें एंड ट्राई टू कन्वर्ट दैट पर्सन, और एटलीस्ट ट्राई टू गेट दैट पर्सन ईमेल कि वो आपका सब्सक्राइबर बन जाए. Just going to check on the questions. Okay, so we have 16 people here, and honestly
The number doesn't matter to me. Even if one person goes and learns something, my job here is done. So I'm happy. And I like it when people are fully involved instead of कि यार बहुत सारे लोग हों and कुछ learn ना कर पा रहे हों या interest ना हो. So as long as you guys are learning, the number is perfectly fine. All right. Easy. Why is easy such a powerful word? Like I told you, कि some words are going to seem very light. अच्छा इसका ऐसा influence है because all of us want ease, all of us want convenience, all of us want कि यार कुछ ना करना पड़े और सब हो जाए, right? कुछ ना करना पड़े और इतने डॉलर आ जाए, कुछ ना करना पड़े और वेट लूज हो जाए. So इसी तरह easy is a very very powerful word in the sense that it helps you, it makes you feel कि ये काम बहुत आसान है. Easy meals है, easy filing है, या easy answers हैं, या easy way to learn a language है. कि this will not make your life more difficult than it already is, and it's going to add convenience. So easy is a nice word to add in your content. Secret. Uh, just like we can't deny we don't like free things, we can't deny that we don't like gossips and we don't like secrets. We like gossips, we enjoy that, we enjoy कि कोई secret, we're going to spill the beans, or we're going to spill the secrets, or the secret is finally out in the open. इस तरह की चीज़ें आप अपने वेबसाइट पे ज़रूर डाल सकते हैं, where you make them feel कि you are revealing something very very important, or something very very grand that wasn't available to them before, but you are spilling the beans right now, and you are giving them the value that was not available to them before. Proven. Proven क्यों एक पावरफुल वर्ड है? बिकॉज इट शोज श्योरिटी, इट शोज अथॉरिटी, इट शोज क्रेडिबिलिटी कि ये चीज़ एक प्रूवन हैक है या प्रूवन टेक्निक है, या इस काम से आपका जो आपके सारे मसले जो बिगड़े हुए ना वो ठीक हो जाएंगे, राइट? सो दिस इज वाई प्रूवन इज ऑल्सो वेरी गुड वर्ड, बिकॉज इट मेक्स यू, इट गिव्स यू श्योरिटी कि ये आपका काम हो जाएगा. I'm sorry. All right, more, more. Who doesn't want more, right? But wait, there's more. So whatever, whenever you're writing something and when you're giving an offer and you say, but wait, there's more. So instantly they're like, okay, I'm getting something more out of it. So yeah, this sounds like a good deal. So yes, more is a good word to add in your copy because it makes the reader feel that they're getting a lot more value than you promised them, and you go in the extra mile for them. Yes, yes, yes is such a positive word. It's a very affirmative word. It makes you feel कि हाँ आपके काम ठीक हो जाएंगे. Yes, this is possible. Yes, you can do this. So when you're writing आपकी वेबसाइट फॉर इंस्टेंस किसी uh, ऐसे प्रोग्राम से है जो आपकी सेल्फ हेल्प से रिलेटेड है, तो वहाँ पे यस का वर्ड बहुत अच्छा है. जिस तरह आप कोई एंग्जाइटी या डिप्रेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है, या आप कोई स्किल सिखा रहे हैं, या आप कोई मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो in all such places and also in other places as well, in other niches as well, yes is a great word to add to your content. Instant. नहीं, चुटकी में काम हो गया, मतलब कि कोई मसला ही नहीं है यार, ये ऐसे काम हो रहा है आपका. तो instant again makes you feel कि this is how you're going to do your work, and when you feel that something is going to happen instantly, you feel drawn towards it because you know कि your problem will be resolved very quickly. ओके जी. तो अब आपने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं. अब आपने क्या करना है, पहले अपना एक ड्राफ्ट बनाएं. सॉरी, मैं एक सेकंड ज़रा कुछ क्वेश्चन देख लूँ बिफोर मूविंग ऑन टू दिस. ओके, थैंक यू सो मच. आई एम ग्लैड आई एम एबल टू ऐड सम वैल्यू. पहले आप अपने एक फर्स्ट ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर आप उस ड्राफ्ट को यू गो थ्रू इट, यू रीड इट अगेन एंड अगेन, यू सी कि कहाँ मैंने CTA डाला नहीं डाला. मेक श्योर आपके हर वेबसाइट
वेब पेज पे CTA हो, आपके डिफरेंट सेक्शंस में CTA हो, यानी कि कहीं आप अपने प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं तो नीचे बुक अ कॉल, बुक एन अपॉइंटमेंट, गेट योर फ्री कोर्स, इस तरह के CTAs, कॉल टू एक्शन डिफरेंट डिफरेंट डालें। फिर आप अपना कॉन्स्टेंटली कंटेंट इम्प्रोवाइज करते रहें, कंटेंट स्केड्यूल बना लें कि किस हिसाब से आपने अपडेट करना है, ब्लॉग्स के हिसाब से बना लें कि किस दिन ब्लॉग जाना चाहिए आपका, व्हेन इज द न्यू ब्लॉग कमिंग आउट, और उसकी आप अपडेट्स दे सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली यू गोइंग टू मेजर द परफॉर्मेंस के वो वेबसाइट, उसके एनालिटिक्स देके कि वो काम कैसा कर रही है एंड वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। So that's about it. I'm good. I completed it right in time. मेरा यही था that I would just take an hour, and I hope it helped you in some way at least. Thank you for sharing your knowledge, Aisha. My pleasure entirely. I'm glad it helped. All right. How to improve and add new catchy words. Uh, Dictionary.com is a great app. You can download it on your phone. वेब पे यूज़ कर लें। आप क्या करें, उस पे जाएँ, उस पे रोज़ न्यू वर्ड ऑफ द डे आ रहा होता है। उस वर्ड को पढ़ें, उसका मीनिंग समझें, उस वर्ड को अपनी लैंग्वेज में यूज़ करें, ठीक है? देन अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज़ फाइंड आउट 5 पावरफुल वर्ड्स या 5 वर्ड्स, 5 न्यू वर्ड्स, और उसी उसी वेबसाइट से आपको सब मिल जाएगा। मतलब इस तरह की और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट ऑन दैट वेरी वेबसाइट यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ वर्ड्स, एंड देन यूज़ दोज़ वर्ड्स इन योर लैंग्वेज। दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज योर वोकैबुलरी। फिर क्या कर सकते हैं, जिस तरह आई होप यू नो कि थिसॉरस कैसे ओपन करनी है। आप वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड लिखते हैं, उसके आप राइट क्लिक करेंगे, नीचे सिनोनिम्स आ जाएंगे। सिनोनिम्स में आप के पास एक लिस्ट आ जाती है, राइट, ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट मीन मोर लेस द सेम थिंग्स, एंड दीज आर, दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर वोकैबुलरी एज वेल, कि आप सिनोनिम्स जाने वर्ड्स के। बट बढ़ेगी तभी, और वो आपके मेमोरी में तभी स्टिक रहेंगे व्हेन यू आर गोइंग टू यूज देम। सो ट्राई टू यूज देम इन योर राइटिंग, ट्राई टू यूज देम इन योर रूटीन लैंग्वेज, एंड दैट्स हाउ ग्रेजुअली योर वोकैबुलरी विल इम्प्रूव। एक चीज़ जो मैं अपने बेटे के साथ एट टाइम्स करती होती हूँ, जब मैंने उसको कोई चीज़ याद करानी हो, तो मैं स्टिकी नोट्स पे लिख के मैं बेड हेड जो है उस पे लगा देती हूँ, डोर पे लगा देती हूँ, मिरर पे लगा देती हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं कि जो न्यू वर्ड्स आप सीखना चाह रहे हैं वो आप डिफरेंट जगहों पे स्टिक कर दें। अच्छा जी, इंट्रो आई कैची इंट्रो मैंने कहा, पहले आप समझें वेबसाइट की यूएसपी क्या है, वो क्या ऑफर कर रही है जो कोई और नहीं ऑफर कर रहा। फिर आपने उसमें जैसे मैंने पावर वर्ड्स बताए, इस तरह की एक लिस्ट ऑफ वेबसाइट वर्ड्स मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ बहुत दफ़ा। वो उन वर्ड्स में से आप कोई पावरफुल वर्ड यूज़ कर लें। आप एक बज़ वर्ड बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, कोई कंपनी है जो एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करती है, आप डिजिटल ट्रेल ब्लेजर उसको कह सकते हैं। सो ट्राई टू यूज़ अप कम अप विद दीज बज़ वर्ड्स, बिग वर्ड्स, ताकि जो पढ़ने वाला उसको ऐसे फील हो कि this is something amazing. And then you can also start with a quote. There's no harm. You can start with a quote. You can start with a statistic. आपका कितना गेन हुआ, या आपके इस कोर्स ने कितने लोगों को हेल्प किया, या आपके इस टूल ने कितने बिजनेसेस के प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया, या उनका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये सारी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं इंट्रो में, एंड इट बिकम्स वेरी वेरी कैची। ओके, नेक्स्ट मेरा जो गोल है, इट्स टू इनवाइट एन एक्सपर्ट एंड हैव अ सेशन ऑन राइटिंग एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट कंटेंट एंड एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। और इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू डू दिस इन दिस वीक, मैक्स ओवर द वीकेंड, बिकॉज दिस रिलेट्स टू दिस ना। तो अभी ताज़ा ताज़ा आपको ये याद होगा, तो फिर वो एसईओ फ्रेंडली वाली बात हो जाएगी, तो और भी अच्छा हो जाएगा, ताकि आप लोगों को कीवर्ड्स का यूजेज और वो सब आ जाए। डिफरेंट एक्सपर्ट्स के आने से होता है कि डिफरेंट व्यू पॉइंट मिलता है, आप लोगों को भी और कुछ सीखने को मिलता है। सो आई थॉट कि लेट्स मेक सेशंस मोर एंगेजिंग एंड ब्रिंग इन एन एक्सपर्ट। सो इंशाल्लाह he will be with us in the coming few sessions. Any other question? What lovely session. Jazakallah for dedicated time. Keyboard dictionary that helps you correct spelling mistakes. Achha, वैसे this is a very good question because, okay, is it a helping tool? Yeah, it weakens you because आप उस पे rely कर रहे होते हैं. Okay.
आई बिलीव कि अपने स्पेलिंग्स खुद उन पे हाँ करने की ज़रूरत है, मेहनत कि आपको याद रहे, लेकिन उससे टूल्स का क्या काम होता है कि आपकी ज़िंदगी ना थोड़ी-सी ज़रा स्पीड अप कर देती है। तो कोई एट टाइम्स होता है कि स्पेलिंग आपको आते होते हैं, टाइपो हो जाता है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो आई सजेस्ट कि हाँ, आप ये ज़रूर कोशिश करें कि मैं ध्यान से लिख रही हूँ, मैं सोच के लिख रही हूँ और मैं अपने स्पेलिंग सही लिख रही हूँ या अपनी ग्रामर ठीक लिख रही हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम इस तरह के टूल्स लेने की हेल्प लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। बट येस, एट टाइम्स ये ज़रूर होता है कि कुछ स्पेलिंग्स आपको बचपन से ही लग रहा होता है कि वो ठीक है, लेकिन वो गलत होता है। तो इट्स बेस्ट कि यू टेक स्टॉक ऑफ योर स्पेलिंग्स। अच्छा जी, इंट्रो कितने वर्ड्स का होना चाहिए? दैट टोटली डिपेंड्स। ऑलराइट, लेट मी जस्ट शेयर अ वेबसाइट विद यू। मैंने एक खोली हुई थी, ये टेक चूज का होम पेज है। ठीक है, यहाँ पे इसके ब्लॉग्स और वो सब है। इसका उस तरह से आ नहीं रहा। इंट्रो की हम बात करें, लेट मी ओपन अनदर वेबसाइट फॉर यू, जस्ट अ सेक। तो जो इंट्रो होता है वो आपको बहुत लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह यहाँ ये बता रहे हैं, वाई पाकिस्तान या व्हाट इज टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान। सो दे आर नॉट गोइंग इनटू टू मेनी डिटेल्स। ठीक है, एक इन्होंने इन्फोग्राफ सा बना दिया, उसमें बता दिया। सो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट इनके सेक्शंस हैं, उनमें इन्होंने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दिया। इंट्रो हैज़ टू बी वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, सो डोंट स्पेंड लाइक लॉट्स ऑफ वर्ड्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम ऑन इट। ओके जी, आई एम श्योर, आई होप एक्चुअली that you guys learned from it and it was somewhat beneficial. And I'll catch you again. Take care. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Keep fasting. Keep making the most of this month. और खूब सारी इबादत करें. दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मेरी फैमिली को, मेरे बेटे को ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि अब आती जाती रहूँ और बिल्कुल गायब ना। पोस्ट तो मैं कर रही होती हूँ, बट येस, लाइव सेशंस आर सो सो इम्पोर्टेंट। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।